So starting with art forms of Indus Valley civilization. So what we have to discuss in overall of this civilization, we will discuss about the seals of Indus Valley civilization. Seals क्या थे? We will discuss it कैसे दिखते थे और हर एक seal पे क्या symbols होते थे. We will also discuss those symbols and what was the significance of those symbols which were there on the seals. We will also discuss those things. And after that we will be discussing the pottery. Pottery आप जानते हैं what is pottery? बर्तन जो यूज होते, that was the pottery. Different types के होते थे. All of the types will be discussed in the section pottery section of this Indus Valley civilization. After that we'll be discussing the स्कल्पचर्स. स्कल्पचर्स क्या होता है? मूर्तियाँ, जो डिफरेंट मूर्तियाँ बनाते थे ये लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल, वो सब डिस्कस हम करेंगे. आफ्टर दैट ऑर्नामेंट्स एंड cosmetics, all of the items which are being used in Indus Valley civilization, that will be discussed in the section of ornaments and cosmetics. After that, at the end, we'll be discussing the town planning of Indus Valley civilization. We have discussed it in the ancient history also, what was the type of town planning which was going on in all of the Indus, you can say, sites. So here once again we will discuss those the town planning और कुछ और features ऐड करेंगे हम. टाउन्स में कैसे घर होते थे और घरों के अंदर क्या एस्पेक्ट्स होते थे वो हम सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे. घर के बाहर जो भी होता था, द मेन डोर ऑफ द हाउस, हमने वो भी देखा था एंशिएंट हिस्ट्री में वो कैसे था. बट सब चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो जाएंगी विद सम एडिशनल फीचर्स दैट व्हाट वाज इनसाइड द हाउसेस. ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. Seals of Indus Valley civilization. But before that, let me introduce that Indus Valley civilization for the sake of some students who are not aware about the civilization. Here are a lot of new students in the class. So Indus Valley civilization kya thi? It was excavated by the Archaeological Survey of India. How it was excavated, that the director of that ASI, Archaeological Survey of India, the person was named as J.H. Marshall, who was the director or you can say head of the Archaeological Survey of India in the year you can say up to from 1920s to 1930s. These were the years जब ये director किसके थे? Archaeological Survey of India. So he made that possible, the excavation of the sites. As such, first two sites were excavated. First was the site of Harappa. So first Harappa was excavated, and who was the person who was responsible for excavation of Harappa? It was Dayaram Sahani, and this site was excavated in year 1921. And after this site, the next site which was to be excavated was Mohenjo-daro, which was excavated by R.D. Banerjee. He was the person who excavated the site of Mohenjo-daro in 1922. When these two sites were excavated, जब ये खोदी गई थी तो उसी के साथ टैग लग गया किसके साथ? इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ, that it is the first modern civilization of the world. And the reasons for which the tag was given, reasons were that first time it was seen the civilization which had used the burnt brick. I have mentioned this in the ancient history also, that other bricks were being used in other civilizations like other civilization where the Chinese civilization was similar, the Sumerian civilization was there, Egyptian civilization was there. तो ये जो सारी civilizations थी, ये कौन सी bricks use कर रहे थे? sun dried bricks, which we have discussed. What are the sun dried bricks? ब्रिक्स बनाते थे उसी शेप के, लेकिन वो ड्राई करते थे सन. लेकिन इस सोसाइटी में, इस सिविलाइजेशन में, इट वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन व्हिच यूज्ड द बर्न्ड ब्रिक्स, दैट वे द फायर बेक्ड ब्रिक्स. So the strength of these bricks was much more than the sun dried bricks. That is why it was known as the first modern civilization of the world. And after that, when the systems were being observed, that the drainage system was there, proper drainage system hoti thi along the roads, and the houses were there, which were, you can say, the type of modern houses. Every room was having the attached washroom, jaise aajkal modern houses hote. All these features were being discovered on the sites of Harappa and Mohenjo-daro. That is why it got the tag of that the first modern civilization of the world. So it was first time happening that in any civilization this burnt brick was being observed when two sites were excavated. Sites were this Harappa and Mohenjo-daro. ठीक है, तो आप लिखिए पहले थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में. The initiative to excavate
सील्स अभी शुरू नहीं कर रहे हम, पहले थोड़ा सा बेसिक लिखेंगे फॉर द सेक ऑफ न्यू स्टूडेंट्स, अदरवाइज ऑल ऑफ यू हैव रिटन दीज फैक्ट्स जो हम लिखने जा रहे हैं अभी, ये किसने डिस्कवर किया, कौन थे G.H. मार्शल, कौन थे दयाराम साहनी, कौन थे. तो फॉर द सेक ऑफ अदर स्टूडेंट्स आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस टॉपिक, सो यू राइट सम लाइन्स अबाउट दिस. द इनिशिएटिव टू, हाँ आप लिख सकते हो, तो लिखने में कुछ आपका जाएगा नहीं दोबारा, तो आप लिख लो. द इनिशिएटिव टू एक्सकेवेट the sites of IVC, the sites of Indus Valley civilization, the sites of Indus Valley civilization was taken by J.H. Marshall, was taken by J.H. Marshall. In brackets we'll mention the then head of Archaeological Survey of India. The then head of Archaeological Survey of India. Archaeological Survey of India. Next लिखिए. He entrusted the task of excavating sites. He entrusted the task of excavating sites to Dayaram Sahani, excavating sites to Dayaram Sahani and R.D. Banerjee. Dayaram Sahani and R.D. Banerjee. R.D. Banerjee. Next, okay. As such, Sahani excavated Harappa in 1921. Sahani excavated Harappa in 1921, and Banerjee excavated Mohenjo-daro. Banerjee excavated Mohenjo-daro in 1922. Banerjee excavated Mohenjo-daro in 1922. Next, okay. Soon IVC came to be known as most advanced civilization of the world. Advanced civilization of the world, due to the immaculate urban planning, IMMECULATE, immaculate urban planning, and use of burnt brick, of same shape and size, for the first time in the world. Next, okay. The important art forms of Indus Valley civilization. The important art forms of Indus Valley civilization are as follows. Number one, seals. Seals of IVC.
seals. अब क्या थे seals? Seals were the geometric, you can say that shaped objects. जो geometric shapes क्या होते हैं? Triangular भी होते हैं, rectangular भी होते हैं, square भी होते हैं. Different जो shape होती है objects की as a geometrical shapes, ये थे seals. लेकिन seals बनते किससे थे? The river stone steatite, which was soft in nature. The river stone was named as steatite. So majority of the seals were formed by steatite. It was a river stone which was soft in nature, found in river beds of the different rivers of that time. So from these stones, seals were being created. इन्हीं पत्थरों को shape देते थे, triangular, circular, that you can say rectangular या this square shape. तो उन्हीं पे कुछ ना कुछ दिखाया जाता था symbolic form में. That was the form of seal which are being used in the Indus Valley civilization. But it doesn't mean that only steatite was being used for the formation of seals. Seals were formed by other materials also. For example, gold, silver, copper, tin. इन सब material के seals भी बनाए जाते थे. इनकी भी evidences मिले हैं, which shows us that all of these materials were also being used in Indus Valley civilization. कभी-कभी पूछा जाता है, was gold used in Indus Valley civilization? So yes, answer will be yes, it was used in Indus Valley civilization, because we have came across the evidences that some seals were being formed by gold, tin, copper. ये सब चीजें भी use करते थे in the formation of this seals. In fact, the silver was also being used in the formation of seals. Now what were the seals? Seals were the pictographic in nature. Pictography का मतलब क्या था? कुछ pictures बनाई होती थी इन seals पे, and they depict something. कुछ ना कुछ इनका meaning होता रहता था, और इन पे कुछ script भी लिखा गया था. वो भी क्या? Symbols के basis पे था. It was not that any proper written form, so that was on the basis of symbols. So different symbols were being created along with the pictorial that representations. तो symbols कैसे लिखते थे? यहाँ पे जो script देखा गया, script क्या थी? एक line यहाँ से इधर लिखी जाती थी from right to left. Second line was from left to right. ऐसे भी हमें सील्स मिले हैं जहाँ पे ऐसे स्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे, बट अभी तक डिसिफर हुए नहीं है व्हाट आर दी स्क्रिप्ट्स, इनमें लिखा क्या गया था. हम बस सिंबल्स देख रहे हैं इन पे, तो उन्हीं के बेसिस पे हम क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं ये डिफरेंट चीज़ें क्या होंगी. अब इंटरप्रिटेशन किसके बेसिस पे होती है? पिक्टोग्राफिक जो रिप्रेजेंटेशन होती है, जो पिक्चर्स बनाए गए हैं ऑन द सील्स, उनके बेसिस पे हम क्या करें? इंटरप्रेट कि इस टाइम पे क्या होता होगा. मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये रिजल्ट जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये 100% करेक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. तो ये सारी इंटरप्रिटेशंस है. एज यू नो द प्रोटो हिस्ट्री, व्हाट वाज प्रोटो हिस्ट्री? वी हैव द records, but we haven't deciphered those records. So on the basis of logical thinking and that interpretation, we are formulating different results towards these seals. So जो pictographic nature है, इनके साथ कुछ लिखा भी गया है. तो different forms of scripts have been found. या तो सीधे एक ही टाइप की स्क्रिप्ट, या तो from right to left, या कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे भी मिली है जो शुरू होती है कहाँ से? right to left. Next line is starting from left to right. तो ये भी नेचर है क्या? लिखने का, किनका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का. अब जो सील्स है, जो पिक्टोग्राफिक नेचर था, तो डिफरेंट फेमस सील्स बताई गई है जो यहाँ पे पाई गई इंडस वैली सिविलाइजेशन में. फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस सील व्हिच वाज बीइंग फाउंड देयर वाज पशुपति सील. वी हैव सीन दिस सील बिफोर. यहाँ देखा था हमने सील, ठीक है. पशुपति सील क्या था? व्हाट वाज पशुपति सील? इसमें बीच में एक ह्यूमन इमेज बना के है, साइड में उसके कुछ एनिमल्स लगाए गए हैं. तो इसके तीन मतलब बनते हैं. फर्स्ट थिंग, अब देखो वो किस पोस्चर में बैठा है. जब हमने डिस्कस किया था, अ ह्यूमन इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड ऑन ए स्टोन. जो स्टोन का बनाया होता था सील, उस पे ह्यूमन इमेज है. दैट टू सिटिंग इन योगिक पोस्चर, योगा के जो पोस्चर होते हैं उसमें बैठा है. एंड सेकेंड थिंग, जो एनिमल्स सराउंड कर रहे हैं. तो इससे क्या तीन चीजें हाईलाइट हो रही है जो हमने इंटरप्रेट की है इस सील को देख के. फर्स्ट वन वाज दैट उस टाइम पे भी मेडिटेशन होती थी, बिकॉज जब हमने देखा वो किस में योगिक पोस्चर में है, इट शोज दैट मेडिटेशन होती थी उस टाइम पे. सेकेंड थिंग वाज दैट द एलिमेंट ऑफ कोहैबिटेशन वाज देयर, क्योंकि जब ह्यूमन के साथ हम दिखा रहे डिफरेंट एनिमल्स, तो इट शोड दैट कोहैबिटेशन वाज एग्जिस्टिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. थर्ड थिंग इज दैट इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज द प्रोटो शिवा. प्रोटो शिवा मतलब कि उसका एक रेप्लिका है कि ये शिवा है और बाकी सब इसकी पूजा कर रहे हैं. तो तीन थिंग है, एक तो वर्शिप प्रोटो शिवा की, सेकेंड थिंग इज मेडिटेशन उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही थी, थर्ड थिंग इज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ कोहैबिटेशन वाज देयर. वंस अगेन वी विल लुक एट द सील फॉर द सेक ऑफ सम स्टूडेंट्स हियर हु हैवंट सीन द सील्स. क्यों नहीं चल रहे?
डोंट वरी, यू हैव आल्सो गुड टू गो थ्रू दिस मुद्रा आल्सो. डांस फॉर्म जब डिस्कस होंगे मुद्रास भी देखेंगे आप. सो दिस इज दैट सील. थोड़ी शेड आई इसमें आई है. यहाँ पे देखो आप, ये बीच में ह्यूमन फिगर है, ये योगिक पोस्चर में बैठा है, ठीक है. एंड साइड से क्या है, कुछ एनिमल्स बता रखे हैं. तो यही 3 मतलब थे इसके. मेडिटेशन, द प्रोटोशिवा, दिस वाज द प्रोटोशिवा जिसकी पूजा की जा रही थी. साइड में जो एनिमल्स है, इट हाईलाइट्स द को habitation. This was all about the Pashupati seal. And after that, the most other famous seal was the seal which was having the people leaf. हमने डिस्कस किया है, the seal with people leaf. What was that seal? What was that seal? This is the seal which highlights the people leaves. ये क्या डिपिक्ट करते हैं? नेचर वर्शिप. आई हैव हाईलाइटेड दिस थिंग बिफोर दैट जो ये सील है, इससे हमने क्या इंटरप्रेट किया है, समझा क्या इससे हमने, इस टाइम पे नेचर वर्शिप होती थी. क्योंकि पीपल लीव्स, ये क्या, कौन से लीव्स है, एक ऐसे प्लांट है जो C4 प्लांट्स होते हैं. आई हैव हाईलाइटेड द डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड C4 प्लांट्स. द डिफरेंस क्या है? जो C3 प्लांट्स है, दे गिव ऑक्सीजन ओनली एट दी डे टाइम, एंड C4 प्लांट्स हो गया करते रात में भी क्या देते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं, जिसकी वजह से इन प्लांट्स की पूजा करते हैं कौन? द हिंदू सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सो पीपल लीफ इज वन ऑफ द C4 प्लांट्स. दैट इज व्हाई दिस लीफ इज, या इस प्लांट की वर्शिप करते हैं, व्हिच इज आल्सो हाईलाइटिंग द नेचर वर्शिप. आज भी इसकी पूजा होती है. तो इन्होंने इसी से इंटरप्रेट किया या इससे अनुमान लगाया कि उस टाइम पे भी इसकी पूजा होती थी, व्हिच शोज द नेचर इज बीइंग वर्शिप्ड विद द सेक ऑफ दिस सील. दैट वाज द सील ऑफ people leaf. The third seal which was there, which was very much famous, was the unicorn seal. What was the unicorn seal? It was a seal in which an animal was being represented who was having a single horn in the middle. तो ऐसा एक था मिथोलॉजिकल एनिमल. ऐसा आज भी एग्जिस्ट नहीं करते. यूनिकॉर्न हम आज भी यूज वर्ड करते हैं, पर इसको मिथोलॉजिकल मानते हैं हम, जो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है. सो जो भी मिथोलॉजिकल होता है, ये हम मानते हैं ये नेचर का है सब कुछ. हमारे मजहब को भी अगर हम देखेंगे, हम भी क्या, किस पे हम ईमान लाते हैं? जो हमने देखा ही नहीं है. हम बहुत चीज़ें ऐसी मानते हैं जो हमें पता ही नहीं है, तो हम वो क्या बोलते हैं, नेचर की चीज़ें है. ये क्या, कौन सी चीज़ है जो गॉड ने दे रखी है, हमने देखी नहीं है, बट फिर भी हम बिलीव करते हैं उन चीज़ों पे. सेम इज द केस विद द यूनिकॉर्न सील. जो एनिमल है विद द वन हॉर्न इन द मिडल, सो इट इज़ नॉट बीइंग, यू कैन से दैट हाईलाइटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ना तो ये कभी मिला है, तो इसकी वजह से ये लगता है मिथोलॉजिकल एनिमल है. फॉर दैट थिंग इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड दैट इट वाज यूज्ड फॉर द नेचर वर्शिप. जो भी हम देखते नहीं है कहीं पे, उसको हम यूज करते हैं एज ए नेचर वर्शिप. सो विद द हेल्प ऑफ दैट यूनिकॉर्न सील, इट वाज आल्सो inferred that this was used for nature worship. So this is that animal who is having only one horn in the middle, which is named as unicorn. So seal is named as unicorn seal, which depicts the nature worship. So 3 types of seals I mentioned here. One was for the Pashupati seal, which highlighted some things. Other was people leaf seal. Other was this unicorn seal. The 3 types of seals. And some seals were used as amulets. ये भी मैंने बताया कि एमुलेट क्या होता है, तावीज़ होता है. तो एमुलेट की तरह जो सील्स यूज होती थी, इट हाईलाइटेड द प्रैक्टिस ऑफ शैमनिज्म. दैट मीन जो उस टाइम पे ये मैजिक वैजिक की प्रैक्टिसेस थी, ये तब भी चलती थी. तावीज़ आज भी उसी सिग्निफिकेंस के लिए पहना जाता है. अगर कहीं पे भी इवल आपके साथ चल रहा है, तो वर्ड ऑफ दैट इवल, दैट तावीज़ इज बीइंग व्हेन यू कैन से बाय अ लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी हियर इन कश्मीर आल्सो. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, टू वर्ड ऑफ दैट इवल, उसको दूर करने के लिए, जो भी आपके साथ चल रहा है, कुछ ऐसी नेगेटिव ये चीज़ें आपके साथ चलती रहती है, उन चीज़ों को दूर करने के लिए उस टाइम पे भी तावीज़ पहनते थे. दैट वाज नोन एज एमुलेट. सो कुछ सील्स ऐसे भी मिली which were being used as amulet. That highlighted the practice of shamanism was being practiced in the Indus Valley civilization. And some seals were there which were for the purpose of trade and commerce. आज भी हम seal किसे कहते हैं? In this modern society, seal हम किसे कहते हैं?
जो ऑफिशियल पोजीशंस पे होते हैं, जब भी कोई डॉक्यूमेंट होता है विदाउट सील आप उस पर अथॉरिटी मानते नहीं हो, आप उसको एज ए डॉक्यूमेंट ऐसे ही विदाउट यू कैन से दैट वो आपके लिए सिग्निफिकेंट नहीं होता है जब तक उस पर किसी ना किसी की सील होती है, किसी ऑफिस की। तो उस टाइम पे भी जो ट्रेड एंड कॉमर्स होता था बिटवीन द डिफरेंट सिविलाइजेशंस, जब वो सामान बेचते थे फ्रॉम वन सिविलाइजेशन टू अदर सिविलाइजेशन, दैट यू कैन से कंटेनर, दैट बॉक्स जिसमें भी सामान होता था उस पर सील होती थी, किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सो दिस seal was also being used for trade and commerce of Indus Valley civilization, and other seals which were being found in the Indus Valley civilization by the seals which were having the symbols of pi and phi। ये क्या होता है पाई, ये क्या है फाई, वैल्यू क्या है दोनों का, पाई इज इक्वल टू 3.14, फाई इज इक्वल टू 1.618। यहाँ ज़्यादा सोचना नहीं है इस बारे में, ये बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए था। वी डोंट हैव टू गो ऑन द मैथमेटिकल वैल्यूज, बट आज की बात कर रहा हूँ कि इनका वैल्यू है क्या इन दी प्रेजेंट यू कैन से कॉन्टेक्स्ट। बट उस टाइम पे कुछ सील्स ऐसी भी मिली थी जिन पे ये साइंस पाए गए, द पाई एंड फाई। ये आज किस लिए यूज होती है, साइंस फॉर द एजुकेशनल पर्पस इन द मैथमेटिक्स। सो हमने भी इस पे वही अनुमान लगाया कि उस टाइम पे भी सील जो है ये किस लिए यूज होती थी, फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। उस टाइम पे भी लोग पढ़ते थे, एंड दैट इज वाई दीज सील्स आर हैविंग द साइन ऑफ पाई एंड फाई। But still I can say that it is not that 100% surety that it were used for the educational purposes. But on the basis of present context, when we know that pi and phi are the mathematical values, on that thing we are, you can say, हम वही फिर से guess कर रहे कि उस टाइम पे भी क्या होता था, education purpose के लिए seals use होती थी, the seals which are having pi and phi symbols। समझ का लिखिए। It is a geometrical shaped, it is a geometrical shaped object, it is a geometrical shaped object, geometrical shaped object mainly created from soft river stone steatite, mainly created from soft river stone steatite, mainly created from soft river stone steatite। नेक्स्ट देखिए, there are instances of seals made from, there are instances of seals made from metals like gold, silver, metals like gold, silver, copper and bronze, Next देखिए, seals were pictographic in nature, which means pictures and symbols were created on seals, Next देखिए, the script was written, what I mentioned about script, that most of the scripts were found from right to left, but कुछ scripts ऐसे मिली थी जहाँ पे bidirectional था, one line was from right to left, other line was from left to right। So you write down this as script was written mostly from right to left, the script was written mostly from right to left, but bidirectional writing style, that is right to left, and left to right on another line,
and left to right on another line had also been found in Indus Valley civilization. Also been found in Indus Valley civilization. Next, okay, they are one of the most important artifact. They are one of the most important artifact from Indus Valley civilization, और short में लिखिए IVC, from IVC, and are one of the most important source of information, also. Next, okay, the very famous example of Pashupati seal, indicates the practices prevalent in IVC. Indicates the practices prevalent in IVC. For example, they worshipped Proto Shiva. Comma, they practiced meditation. And moreover the concept of cohabitation was also there. Concept of cohabitation is also there. Next, okay, the seal with people leaf. Indicates the nature worship. At that point of time. Next, okay, one of the very often repeated seal of this time was unicorn seal. Which also indicates towards nature worship. Repeated क्यों थी ये? Because this was the one of the, you can say, famous seal of Indus Valley civilization. एंट्री लेने के लिए हमेशा ये सील चाहिए होती थी, द सील ऑफ यूनिकॉर्न.
मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आपने मूवी देखी होगी द मूवी ऑफ मोहनजोदारो, वहाँ पे सिटाडेल में जाने के लिए यूनिकॉर्न सील बहुत ज़रूरी होती थी। तो जो भी कॉमनर्स जाते थे कहाँ पे, सिटाडेल पे, फॉर डिफरेंट पर्पसेस, फॉर रिचुअल बाथिंग या कुछ खरीदना होता था वहाँ पे या कुछ भी करना होता था वहाँ पे, तो हाथ में क्या होना चाहिए था, यूनिकॉर्न सील। दैट वाज द मोस्ट रिस्पेक्टेड सील ऑफ इंडस वैली civilization. That is why this seal was repeatedly found at the different sites of Indus Valley civilization. Next, देखिए, many of the seals were used as an amulet. Many of the seals were used as an amulet. As an amulet to ward off the evil, to ward off the evil, W-A-R-D, ward off, O-F-F, to ward off the evil. Used as an amulet to ward off the evil, which indicates that shamanism was practiced in IVC. Shamanism was practiced in IVC. What is shamanism? The magic. जो मैजिक जो भी एक दूसरे को हार्म करने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज शैमनिज्म, ऑल्सो प्रैक्टिस्ड इन IVC. नेक्स्ट देखिए, seals facilitated in the trade and commerce, with other civilizations, and it acted as the mark of authority, of Indus Valley civilization. Mark of authority of Indus Valley civilization. Next, okay, in some of the seals, mathematical symbols like pi and phi, were created. Pi and phi were created, which indicates that seal was also used as an educational tool. That seal was also used as an educational tool. After that, the next is pottery of Indus Valley civilization. Pottery of Indus Valley civilization. So what was there in the pottery? That their pottery was having some general features and characteristics, like they used the red and black color for the color of the pottery. So red and black were the common pottery of Indus Valley civilization, but they were having some specialized potteries which were being used for different purposes. So one of the specialized pottery was the miniature vessel. Miniature vessel.
It was a type of vessel which was being used for decorative purposes. आज भी अगर आप देखोगे ऐसे vessels मिलते हैं हमें जिन पे हम वो flowers रखते हैं, तो उस टाइम पे भी ये use होते थे as miniature vessels which were being used for decorative purposes. These were the colored vessels which were used in the houses for different purposes, for the sake of rooms, for the sake of different things, washrooms. कहीं पे भी ये decorative purpose के लिए क्या लगाते थे? Miniature vessels, and इनमें क्या रखते थे? Flowers रखते थे. That was the miniature vessel which was being used at the time of Indus Valley civilization. Second was faience party. जो faience material था, that was actually the lustrous material. What is lustrous? Which gives you shine. So it was actually the name of material which was named as faience. So pottery भी इसी के नाम पे थी, and this was the, you can say, that type of utensil which was being used at the time of Indus Valley civilization. So this was type of a faience pottery, type of utensil which was being used for the consumption of food at the time of जब guests आते थे उस time पे यही खास faience pottery use होती थी, because it was the pottery which was being with the shine. That was a lustrous material faience. That is why the guests were used to serve in the faience pottery, and it was also with the decoration, and that was the, you can say, significance of the faience pottery. And the third type of pottery which was being there in the Indus Valley civilization was perforated pottery. What was perforated pottery? It was a type of vessel जिसमें एक होल होता था from the bottom, and side से across the जो utensil होता था उसमें holes हुआ करते थे. जब ऐसा utensil देखा गया तो उस पर भी वही guess work था कि इस utensil का क्या काम होता होगा उस टाइम पे. तो they thought that this was for straining liquor. शराब निकालने के लिए वो क्या करते थे, दैट राइपन ग्रेप्स वेर बीइंग पुट इनटू दैट वेसल, एंड ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया तो उसका जो जूस था वो साइड से एंड बॉटम से बाहर आता था. दैट वाज द परफोरेटेड वेसल विच वाज बीइंग यूज्ड फॉर परफोरेशन ऑफ या स्ट्रेनिंग आउट ऑफ लिकर फ्रॉम दिस परफोरेटेड pottery. So these were some, you can say, that famous potteries. 3 potteries are the most famous. बाकी भी potteries थे, but they were the common potteries which are being used into the day-to-day life for purpose of eating, for the purpose of drinking water. So वो सब common potteries थी. But 3 बहुत famous थी. One was this miniature vessel used for decorative purposes. Second was faience pottery, which was there used as the utensil for the guest. And third was the perforated vessel or pottery, you can say, and which was used for straining liquor. Vessel कैसा था ये? Holes होते थे. At the bottom one main hole was there, and on the sides small holes were there जहाँ से liquor निकाला जाता था. That the pressure was applied on that ripened grapes and liquor were coming out from the holes. चाहे वो bottom था या sides थे, तो वही माना गया it was used for straining liquor. And फिर से कह रहा हूँ ये 100% हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. It's just the guess work which has been used by the archaeologicals जो ये study करते हैं या जो बाकी historians है, उन्होंने ये सब guess work पे ये history दी है that this vessel was used for straining liquor. समझ के आप लिखिए इसमें. The general purpose pottery of Indus Valley civilization was red and black color. Next point, okay. It was mainly used as storage vessels, as well as utensils. Next, okay. There was also specialized pottery. In Indus Valley civilization. Which were as follows. Number 1, miniature vessel.
साथ साथ आप ये बनाते जाइए. Miniature vessel. Write in this. बनाया सबने? कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? 2 सेकंड का काम है ये. मिनिएचर वेसल. इसमें लिखिए, they were long and narrow vessels. They were long and narrow vessels. Long and narrow vessels with beautiful designs. With beautiful designs. Which were meant for decorative purposes. Which were meant for decorative purposes. Second लिखिए, faience vessel. Faience vessel. Faience vessel. Faience vessel. Write in this. It was a vessel. It was a vessel made up of faience. It was a vessel made up of faience. Made up of faience. In brackets, we'll mention a lustrous material. A lustrous material. I'm repeating that. lustrous material कौन सा होता है जो shine देता है काफी. A lustrous material. A lustrous material, and it was perhaps used as a utensil. It was perhaps used as a utensil. Used as a utensil. Third is perforated pottery. Perforated pottery. Perforated pottery. Write in this. It was a pottery. It was a pottery
with a large hole in the bottom. It was a pottery with a large hole in the bottom, large hole in the bottom, and small holes across the sides, and small holes across the sides, small holes across the sides, that might have been used for, that might have been used for, that might have been used for straining liquor, straining, S-T-R-A-I-N-I-N-G, straining liquor. Straining liquor. The next thing about the Indus Valley civilization is the sculptures of Indus Valley civilization. Sculptures of Indus Valley civilization. There were three types of sculptures. First was the stone sculpture, and the most, you can say, common stone which was being used for creativity purposes was the steatite, the same steatite stone. उसी से बनाते थे sculptures, मूर्तियों की बात कर रहा हूँ मैं. Second was the terracotta, third was the bronze. जो stone sculptures है उसमें बस carving करनी होती है. that stone, आपने बड़ा stone लिया, उसको carve out किया, एक shape दी, that was the stone sculpture. It was a simple, created from the river stone steatite. And one of the famous example for this stone sculpture is the bearded priest. So this is a sculpture which has been carved out of this steatite stone. Stone को shape दी गई है, तो यही है. अब देखो जो lines है, the lines, parallel lines which are going, it has been depicted as the beard of the priest. So this sculpture is named as the bearded priest, which has been created from the soft river stone steatite. So that is the famous example of the stone sculpture of Indus Valley civilization. तो आप लिखे पहले stone sculpture. Stone sculpture. This was the sculpture. This was the sculpture. This was the sculpture. Was the sculpture which were being created by soft river stone steatite, which were being created by soft river stone steatite, and one of the famous example of this sculpture is bearded priest. Bearded priest. So that was all about stone sculpture. Simple है, steatite से बनता था, shape देते थे. तो famous example क्या है? Bearded priest है. Second type of sculpture was terracotta. It was a sculpture which was being created from clay. किससे? क्ले से बनता था. क्ले से जब स्कल्पचर बनाते थे फिर उसको बेक करते थे ऑन द फायर, तो वो अपनी शेप हार्ड बनाता था, हार्ड शेप लेता था अपनी, एंड इट वाज यू कैन से दैट क्रिएटेड बाय द क्ले. एंड द फेमस एग्जांपल फॉर द टेराकोटा स्कल्पचर इज द स्कल्पचर ऑफ मदर गॉडेस. अभी आप कुछ लिखेंगे नहीं, मदर गॉडेस.
तो बहुत एबेंडेंट इमेज अगर पाई गई पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, यानी कि ज़्यादा स्कल्पचर्स अगर पाए गए, वो किसकी पाई गई है? मदर गॉडेस की, विच ऑल्सो डिपिक्टेड दैट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन फीमेल्स वर ऑल्सो बीइंग वर्शिप्ड। इसमें समझना है कि इस पर क्या क्या इन्फ्लुएंसेस निकल सकती है जब ज़्यादा ये इमेज पाई गई, इमेज यानी कि स्कल्पचर्स पाए गए किसके? मदर गॉडेस पे। तो दैट इज द रीजन दैट शी वाज नेम्ड एज द मदर ऑफ फर्टिलिटी या गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, बिकॉज इन वन यू कैन से एट सम प्लेसेस जहाँ पे ये स्कल्पचर बनता था मदर गॉडेस का, तो वहाँ पे डिपिक्ट किया जाता दैट फ्रॉम द नेवल पॉइंट दैट प्लांट इज इमर्जिंग एंड एनसर्कलिंग द बॉडी, विच शोड दैट द फर्टिलिटी फ्रॉम द नेवल पॉइंट। तो दैट इज वाई शी वाज बीइंग कंसिडर्ड एज द गॉडेस ऑफ fertility, the famous sculpture of mother goddess. Let's have a look on the sculpture of the mother goddess. These all are the sculptures of mother goddess. Different sculptures है, लेकिन सब में क्या है? मदर गॉडेस ही डिपिक्ट की गई है। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट शेप्स दी जाती थी। कहीं पे दिखाया गया एक वो ट्री डिपिक्ट हो रहा है नेवल पॉइंट से, एंड दैट इज सराउंडिंग टू दी बॉडी, एंड विच इज शोइंग दैट इट इज दी गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, बिकॉज फर्टिलिटी नेवल पॉइंट से डिपिक्ट की गई है। तो डिफरेंट इमेज बनाई गई थी मदर गॉडेस की। ये सब इमेज जो है, ये सब इमेज मदर गॉडेस की है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बनता था। बट ये स्कल्पचर्स किसके बनते थे? बाय क्ले, एंड दीज वर बीइंग बेक्ड आफ्टर, जब फॉर्मेशन होती थी तब इनको बेक करते थे, उसके बाद उनको शेप मिलती थी, एंड द फेमस वाज द मदर गॉडेस, which is a famous example of terracotta sculptures. You have to remember the material which has been used in the terracotta sculptures, and the material was the clay which was baked on fire. Write down in it. Terracotta sculptures. Terracotta sculptures. It is the sculpture made from clay. It is the sculpture made from clay and baked on fire. And baked on fire. For example, sculpture of mother goddess. Sculpture of mother goddess. Sculpture of mother goddess. In brackets we'll mention most abundant image found in Indus Valley civilization. Most abundant image found in Indus Valley civilization. Next, okay, in some of the sculptures of mother goddess, a plant was depicted emerging from her navel point. Navel point means the point which is here, abdomen mein jo ye hota hai, that depression, that is the navel point. And slowly encircling the body, emerging from her navel point and slowly encircling the body. Slowly encircling the body. Encircling the body. Next, likhiye on the basis of this image. On the basis of this image, it is said that she was goddess of fertility. It is said that she was goddess of fertility. Third one is the bronze sculpture which has been created from bronze. ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स क्या होते थे? ये बनते थे मिक्सचर से।
ब्रॉन्ज डायरेक्टली इस टाइम पे नहीं था, मिक्सचर से बनते थे फ्रॉम मिक्सचर ऑफ टिन एंड कॉपर. जब टिन एंड कॉपर मिलते हैं वो क्या बनाते हैं, ब्रॉन्ज बनाते हैं. तो उस टाइम पे ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स बनते थे, बट इनकी टेक्निक क्या होती थी, इसका नाम था द टेक्निक विच वाज बीइंग यूज्ड बाय द इंडस वैली पीपल फॉर द क्रिएशन ऑफ ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स वाज द lost wax technique. We have discussed this technique before in the earlier classes or not? नहीं किया? किया? Majority is saying no. Lost wax technique क्या है? First, a sculpture was created by wax. Wax जानते हो? कैंडल देखा ना सबने? किसका बना होता है? वैक्स का बना होता है. तो वही वैक्स से पहले स्कल्पचर बनाते थे. उस टाइम उस पे फिर कोटिंग करते थे क्ले की. जब मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी शेप बनाई, कुछ शेप, रफली एग्जाम्पल, एक वैक्स का ऐसा शेप बनाया, इस पे कोटिंग करते थे किसकी, क्ले की. जब कोटिंग करते थे फिर इसको रखते थे ऑन फायर फॉर द पर्पज ऑफ बेकिंग. बेकिंग के साथ साथ होता क्या था, जब इसको हीट लगती थी अंदर से वैक्स पिघल जाता था, एक होल किया जाता था एंड वो वैक्स क्या बाहर आता था उस होल से. तो अंदर से स्पेस क्या होगी, खाली होगी. तो उस टाइम पे उस स्पेस में फिर फिल किया जाता था कॉपर एंड टिन. तो जब उनको फिल किया जाता था देन द पीरियड वाज देयर, जब ये कूल ऑफ रखने के लिए रखते थे, ये ठंडा हो जाता था, अंदर से जो कॉपर एंड टिन का मिक्सचर होता था दैट वाज ब्रॉन्ज. वो जब ठंडा होता था वो शेप लेता था स्कल्पचर की. आफ्टर दैट जो ऊपर से क्ले कोटिंग होती थी इसको तोड़ देते थे, इसको पील ऑफ कर देते थे, उसके बाद अंदर से क्या निकलता था, ब्रॉन्ज स्कल्पचर. दैट वाज द लॉस्ट वैक्स टेक्निक. लॉस्ट वैक्स टेक्निक नाम क्यों है, क्योंकि जो वैक्स था अंदर से दैट वाज लॉस्ट विद द हेल्प ऑफ हीट. दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज लॉस्ट वैक्स टेक्निक. और अंदर से क्या निकलता था, ब्रॉन्ज स्कल्पचर. आज भी इस टाइप का एक स्कल्पचर बनाया जाता है विच इज वेरी फेमस इन द एरिया ऑफ इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना. And in fact, that sculpture, that bronze sculpture, has got the GI tag status. GI tag status क्या होता है, Geographical Indication Status. And that famous sculpture is named as Dokra. Dokra sculptures of Telangana. ये सब स्कल्पचर्स जो आप देख रहे हो ये सारे ब्रॉन्ज के हैं एंड ये सब स्कल्पचर्स को डोकरा स्कल्पचर्स कहते हैं. इट्स नॉट ओनली वन फॉर्म ऑफ स्कल्पचर, ये बस नाम है, ब्रॉड नेम है डोकरा स्कल्पचर्स, जो कहाँ का है, तेलंगाना स्टेट, विच हैज गॉट द GI टैग स्टेटस ऑल्सो. सो ऑल दीज स्कल्पचर्स आर क्रिएटेड बाय द सेम टेक्निक, बाय द लॉस्ट वैक्स टेक्निक. अभी भी यूज होती है. जितने भी आप स्कल्पचर्स यहाँ पे देख रहे हो ये सब क्या है, डोकरा आर्ट है, डोकरा स्कल्पचर्स है. बहुत ही छोटे छोटे स्कल्पचर्स होते हैं जो कहाँ बनते हैं, इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना. तो आपको ये ज़रूरी याद क्यों रखना, बिकॉज इट हैज़ गॉट दी GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग स्टेटस. कभी कभी पूछा जाता है कि विच स्टेट इन इंडिया प्रोवाइड्स द लॉस्ट वैक्स टेक्निक से जो स्कल्पचर्स बनते हैं वो कहाँ बनते हैं. इट इज इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, नेम्ड एज डोकरा आर्ट या डोकरा स्कल्पचर्स. आपको समझ आया ब्रॉन्ज स्कल्पचर बनता कैसे, लॉस्ट वैक्स ये वैक्स टेक्निक समझ आई. पहले वैक्स से बनाते थे, उसके बाद क्ले कोटिंग, उसके बाद हीट देना, वैक्स पिघल जाता था, दैट मेल्ट्स अवे एंड आफ्टर दैट दिस कॉपर एंड टिन वाज, यू कैन से दैट उसमें फिल करते थे. उसके बाद क्ले की कोटिंग को जब ठंडा हो जाता था क्ले की कोटिंग को हटा देते थे, वहाँ से निकलता था क्या, ब्रॉन्ज स्कल्पचर. दैट वाज द टेक्निक विच वाज बीइंग यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. राइट, इन दिस ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स. These were the sculptures. These were the sculptures made from copper and tin. Made from copper and tin. Copper and tin. Next देखिए, these sculptures were created from a technique which was known as lost wax technique, इस टेक्निक को लिखने की जरूरत नहीं है हमें. अब क्या होता है इसमें आप याद रखेंगे, लॉस्ट वैक्स टेक्निक में क्या होता है, बहुत सिंपल है, फिर से बता रहा हूँ.
वैक्स का स्कल्पचर बनाना, उस पर क्ले कोटिंग करना, हीट देना, वैक्स उसका मेल्ट हो जाना, फिर उसके बाद कॉपर एंड टिन का मिक्सचर उसमें इनकॉर्पोरेट करना, उसके बाद कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, क्ले की कोटिंग को हटाया जाता है, स्कल्पचर तैयार हो जाता है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर। अब इससे क्या पता चलता है कि नो हाउ ऑफ इंडस वैली पीपल, बिकॉज एट दैट टाइम इतना फिर आप सोचते हो या टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट आपके अंदर था दैट आपको ये पता था कि ये कॉपर एंड टिन मिला के ब्रॉन्ज बनाते हैं। आफ्टर दैट जो ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक, इट इज यू कैन से दैट बहुत ही एप्लीकेशन ऑफ माइंड हो गया था उस टाइम पे, विच शोड दैट द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ इंडस वैली पीपल। सो वी कैन से दैट दिस टेक्निक shows us the know-how of the Indus Valley people, that how much intelligent and how much you can say that the creative people, this people of Indus Valley civilization were. समझ गया? लिखे next. It indicates, I mean say lost wicks technique indicates know-how of K-N-O-W, know-how, H-O-W, know-how of Indus Valley people. Know-how of Indus Valley people. Next, like still there are many societies. Write down next point. Still there are many societies. Still there are many societies in India. Many societies in India which refer lost wicks technique. Which refer lost wicks technique. Which refer lost wicks technique for creating bronze sculptures. For creating bronze sculptures. For creating bronze sculptures. For example, GI tagged sculpture. GI tagged sculpture of Dokra. GI tag sculpture of Dokra. GI tagged sculpture of Dokra in brackets, which is a state, Telangana. और अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में से एग्जांपल देखें किसकी ब्रॉन्ज, अभी एग्जांपल क्या थी जो आजकल कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में है, द आर्ट ऑफ डोकरा, दैट इज द ब्रॉन्ज स्कल्पचर. बट इफ वी विल सी एट द लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट व्हाट वाज अ स्कल्पचर व्हिच वाज बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम द ब्रॉन्ज, दैट वाज द डांसिंग गर्ल स्कल्पचर. So this is a sculpture of dancing girl which was being created by bronze from the same technique of lost wicks technique. समझ? The second famous example is the bronze bull. Bronze bull अक्सर कहाँ पे मिला था? कालीबंगन. We have discussed the sites of Indus Valley civilization in ancient history. The site of कालीबंगन which was there, वहाँ पे bronze bull का sculpture मिला था. That was very much famous for the lost wicks technique. This is a sculpture of bronze bull which was mainly created in Kali at the site of Kalibangan. So Kalibangan का bronze bull and the dancing girl जो बहुत सारी sites पे पाया गया. These are the famous example of Indus Valley civilization which were being created from lost wicks technique as the bronze sculptures. समझ गया? तो examples देखिए. Examples of Indus Valley civilization क्या थी? Examples of Indus Valley civilization for the bronze sculptures. Dancing girl sculpture. Dancing girl sculpture. And second example लिखिए, bronze bull of Kalibangan. Bronze bull of Kalibangan. Bronze bull of Kalibangan.
bronze bull of Kali Pangan. So that was all for today. Tomorrow we'll be discussing the ornaments and the cosmetics as well as the town planning of Indus Valley civilization. Thank you for today. We'll meet you tomorrow at the same time.